So let's run you through all the political reactions coming in. Like we told you, the centre is expected to present the Waqf Bill in the Lok Sabha on April 2nd. And they've got some backing in Kerala, importantly from the Catholic Bishops' Council, which has asked MPs from the state to vote in favour of the Waqf Amendment Bill. Sources say that the Waqf Bill may be presented in Lok Sabha on April 2nd. The opposition has made their stand clear, alleging that the bill is being introduced for political gains. But importantly, the Ajmer Dargah Chief has also batted for the bill. He said that the time has come for reforms in Waqf and that Waqf was not transparent anymore. The Kerala Catholic Bishops' Council has asked MPs from the state, from Kerala, to vote in favour of the Waqf Amendment Bill, which has faced opposition from both the Congress and the left. And this statement from the Bishops' Council has been hailed by Union Parliamentary Affairs and Minority Minister Kiran Rijiju, who's also welcomed it, reiterating that the Waqf Amendment Bill isn't against any community. Now, Nirmala Sitharaman has also, in fact, hailed the Bishop Council's appeal. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन लोगों से कहा था कि जब ईद की नमाज वो अदा करें तो अपने हाथों में वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांध के वो नमाज अदा करें। तो ऐसे कई नमाजी आपको आज दिख जाएंगे जिन्होंने अपने हाथों में काली पट्टियां पहनी हुई हैं। करीब आपको बता दें कि 1 लाख के आसपास लोग जो है वो ईदगाह पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन सभी ने काली पट्टियां नहीं पहनी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काली पट्टी पहन के आए हैं, जिन्होंने अपना विरोध यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से जताया है। और आप देख सकते हैं उनके हाथों में ये काली पट्टियां जो है वक्फ बिल के विरोध में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनसे कहा था, जो अलविदा जुमा है उसमें भी जो नमाज अदा की गई थी तब भी काली पट्टियां पहनी थी और आज भी इन्होंने काली पट्टियां पहनी है। काली पट्टी बांध के नमाज अदा की है ईद की, क्यों? काली पट्टी अपन ने बांध कर इसलिए नमाज अदा करी है क्योंकि जो है इसमें जो वर्क बोर्ड का जो बिल आने वाला है उसमें हम लोगों का जो है विरोध है, ताकि ये शांतिपूर्वक विरोध रहा है और सभी ने अलविदा के जुमे में बांधे थे और ईद की नमाज में भी बांधे। हमारे बड़ों की तरफ से एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, एकदम पीसफुल है। इसमें कोई नारेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तकबीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है। जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे जो एंसेस्टर थे, उन लोग ने जो अपनी ज़मीन दी वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए दे दी, जिसपे मदरसे, मस्जिद और हमारी ईदगाह, हमारे कब्रिस्तान है। अगर गवर्नमेंट के अंदर चले जाएंगे, कुछ में चले जाएंगे, तो फिर वो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे, फिर वो ज़मीन का कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल के अगेंस्ट है और ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है बिल के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कैथोलिक काउंसिल ने अच्छा सा स्टडी किया और वक्फ का जो पुराना प्रोविजन है उसके वजह से जो दिक्कतें हैं उसको देख करके अपील किया है। करोड़ों मुसलमान जो आम मुसलमान है, चाहे वो दरगाह के हो, चाहे वो कोई अलग अलग संगठन में हो, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को विरोध करने वाले चंद लोग वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों का वक्फ जायदाद को कब्जा करके रखा हुआ है। कुछ एमपी से, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग हैं, वो मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमानों को वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। Today, both Nirmala ji and Kiran Rijiju ji have also welcomed this, and I thank them for it. But the issue is that the Kerala Catholic Bishops' Council and many other Christian organizations are asking the MPs from Kerala to take a stand on the Waqf Amendment Bill and vote in favor of it, because in Kerala, in a place called Munambam near Cochin, hundreds of families, poor families, are having the threat of their land being seized by the Waqf hang on their heads. The MPs of Kerala did what is their duty to do, which is to help people who are in trouble, help people and solve their problems rather than only play appeasement politics. संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी, सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। देखिए, हम सड़क पर उतर के कोई वो तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं,
हम सड़क उतर कर सरकार के सामने कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक ईद के दिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी सौगात मत दीजिए मुसलमानों को। सौगात ये होगी कि आप जो अधिकार मिला है संविधान में वो अधिकार मुसलमानों को मिल जाना चाहिए। Why do you think that Waqf, it's time to reform the Waqf right now? We have seen over the years, from last 50 years, the Waqf properties across India, they have been always underutilized, they have been gross mismanagement. There should be transparency, there should be accountability, and there should be professional approach to manage the Waqf properties so that the original intent of those who have donated and made their possessions as part of the society's welfare, they should be utilized to the maximum and fullest form. And I think with the present reforms, if that can be realized, that's the best thing that can happen, and that will enhance the education, healthcare, and well-being of the Muslim community at large, especially in the rural pockets and places where they have not been able to upgrade that. So I think this is much important, and the corruption and whatever we can see, the real actual wealth has never been realized. So with this reforms and amendment bill, if this can be realized, I think that's the greatest gift that could be given to the Muslim community of India. Okay, let's bring in Shibi Molo on this broadcast. She's joining us live from Thiruvananthapuram in Kerala. Shibi, just explain to us really the importance of the Kerala Catholic Bishops' Council support for the Waqf Bill. How influential are they? And does this mean that there will be pressure on the left and the Congress in Kerala to change their stand? The Kerala Catholic Bishop Council is one of the most prominent organizations here. In fact, they have written this, they have urged the MPs to support the bill, also in the background of the Munambam issue that's going on since a long time. The locals there, the residents of Munambam, have been protesting since the last 6 months. So they have been demanding the land, they have been demanding their properties to be on their name itself, because the Waqf board had claimed their land, and since the last 2 years they've not been able to uphold their revenue rights in this land. So a lot of discussions are going on. The state government has said that we will ensure that none of them lose their homes. We'll ensure that they stay in their home. They stay in that land itself. But they're really worried about the whole situation. That's when the KCBC has come forward saying that the Kerala MPs should understand the feelings of those people living there and support this bill and help to remove the unconstitutional elements as part of the Waqf Act, is what the KCBC has said. In fact, the left has said that they will be opposing the bill because what their stand is that the bill does not have anything that will help solve the issue of the Munambam residents in Munambam. As far as the Congress is concerned, the IUML, their main ally, has said that the issue of the Munambam residents should be sorted, but it cannot be sorted by opposing by supporting the bill. That is not how it. We are going to oppose the bill completely, but we'll ensure that this situation is sorted amicably, and the government needs to interfere. Which has put the Congress in a fix, because the Congress had voiced their support for the residents, saying that we are standing with the residents, but their national stand as a whole is to oppose the bill, is what we are understanding. Though some of the MPs, especially holding influence in the Christian belt, has said that they will look into their concerns, they will look into the issues raised by KCBC before taking a final confirmation. But as a whole, though it's putting a lot of pressure on the Congress, because Christian vote bank is one of their major, source of strength in the state, especially moving into an elections next year. But as of now, the stand is to oppose the bill, though they're considering the request put forward by the KCBC. So let's see really if there's a rethink on their stand. Thanks, Shibi, for joining us with those details.